Bismillahirrahmanirrahim, my dear students. Assalamu alaikum. Good morning and how a nice Ramadan al Mubarak. Today we are going to discuss lecture number 15, radioactivity. Slide number 1, radioactivity. आपको पता है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिससे हमारे पास उसका जो हायर एटॉमिक नंबर होता है, उसका ये न्यूक्लियस जो है वो बैलेंस नहीं होता, उससे ख़ास किस्म के रेडिएशन होते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। स्लाइड नंबर 1 में आज वाले लेक्चर में अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज यूरेनियम एंड रेडियम और अनस्टेबल, उसका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो ब्रेकअप करते हैं स्मॉलेस्ट एटॉमिक न्यूक्लियस में, और वो स्मॉलर इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस जो है उससे और एलिमेंट्स बनते हैं, देन और एलिमेंट्स जोड़ेगी। The proton and neutron is unstable nucleus regroups together a new nuclei. पता है कि कम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दी दा दोबारा combine شي ونوي nuclei जोड़ شي. This case the release of excess particle energy from the original nucleus. او कम چې سیوا particles دي یا energy د نو په particle پام کې راځي چې هغه ته موږ radiations وته وایي. The elements whose atomic nuclear radiation are said to be radioactive. The radioactive کوم elements دي چې هغه nucleus نه radiation emit کیږي. The spontaneous breakdown of unstable nucleus term radioactive. Disintegration या radioactivity क्या होता है? Disintegration or decay of unstable atom accompanied by the emission of radiation is called radioactivity. Radioactivity we also define as disintegration or decay of unstable accompanied by emission of radiation. कोई भी न्यूक्लियाई है जो अनस्टेबल है, मैंने आपको बताया था कि जिसका एटॉमिक मास तकरीबन एटॉमिक नंबर 81 से आगे है तो उससे रेडिएशन होता है, ठीक है। स्लाइड नंबर 1, टाइप्स उसकी डिफरेंट टाइप्स है, रेडिएशन की कितने टाइप्स है। द रेडियोएक्टिव रेडिएशंस आर ऑफ 3 टाइप्स. They are stored by the Rutherford and sorted by outed by Rutherford ने उसकी डिस्कवरी की थी in 1902 by passing them between two oppositely sharp flat. फिगर नंबर 1 में आपको डिस्काई दे चुके हैं. Then the one bending toward the negative carry positive charge वगैरह अंदाज़ उसका एक्सपेरिमेंट याद है. स्लाइड नंबर 2 की जाने वाले those bending toward the positive flat and carrying negative charge are called beta. कम रेडिएशन ची कहते हैं इलेक्ट्रॉन ची कम beta particles कम चीज़ के तोड़ना ए नोट साइड पर चला नेगेटिव चार्ज हो. तगशंते the third type of radiation. The second type of radiation, positive flat and carrying negative charge. कम ची नेगेटिव चार्ज हो पाए था मंगा गया था सवाई आ गया था मंगा. कम ची पॉजिटिव चार्ज आ गया था अल्फा, कम ची नेगेटिव चार्ज आ गया था मंगा बीटा पार्टिकल हुआ. और पकम माने ची चार्ज नहीं था मंगा गामा पार्टिकल्स हुआ. 3 type radiation. The third type of radiation being on charge, passing a state to electric field, and one name as gamma particle. Alpha beta gamma could be easily detected as these are luminescence on zinc sulfide screen plate. तेमा के source थे radioactive source थे. The slide number 2 की figure number 1 की detection of alpha beta and gamma rays. The source थे the blue color छे थे बड़ा electric field electric और magnetic field positive negative डायरेक्ट ची कमजी मल्ला पदन नेगेटिव चार्ज देना पॉजिटिव चार्ज बीटा बने नेगेटिव चार्ज इन जका पॉजिटिव तरफ तक बैंड कीगी. अल्फा पॉजिटिव चार्ज जका नेगेटिव साइड तस. अच्छा जी, अभी हम आते हैं स्लाइड नंबर 3 की जानिब. हमने जिक्र कर दी, हमने देखा कि इधर जो रेडिएशन होते हैं वो 3 किस्म के होते हैं. आपने देखा अल्फा बीटा एंड गामा, सही है. अभी हम इसी उसको हम किस तरह जानेंगे, उसका क्या क्या काम है. रेडियोएक्टिव मटेरियल से निकल गए अल्फा क्या चीज़ है, बीटा क्या चीज़ है और गामा. हमने सिर्फ चार्ज की बुनियाद पर उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया कि ये नेगेटिव साइड की जानिब जाते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की जानिब जाता है नेगेटिव चार्ज है. किसी भी
चार्ज की जानिब नहीं जाता तो उस पर न्यूट्रल है, लेकिन उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा उसके प्रॉपर्टीज़ हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर से। हम उसको देखेंगे कि उसकी कौन कौन से प्रॉपर्टी हो सकते हैं इसके अलावा। स्लाइड नंबर 3 है। सो अल्फ़ा बीटा एंड गामा डिफर फ्राम ईच अदर एंड नेचर एंड प्रॉपर्टीज़। द चीफ प्रॉपर्टीज़ आर, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और नेचर की बुनियाद पर एक दूसरे से मुख्तलिफ है। सो द फर्स्ट ए वेलोसिटी, penetrating power and ionization. So, on the base of nature, alpha की जानिब हम आते हैं. They consist of stream of alpha particles. By measuring their charge to mass ratio, the report shows that they have mass of 4 atomic mass unit in charge of +2. The +2 charge दे पे alpha बांधे दा the helium the nucleus बको तो मुंगा helium nucleus वायु ज़का चे द बंदे charge of the helium nuclei होता and they are represented by alpha 24 or helium He 24. ठीक है. Velocity मतलब स्पीड सुम रही. These particles are ejected from radioactive nuclei at very high speed and about 1/10 of light. तकरीबन 1/10 of light और speed दे देते हैं. Penetrating power in their charge to mass relatively large size and then prefer very little power of penetrating through matters. Penetrating power comes the charge to mass ratio. Organization that can cause an intense ionization of the gas through and process through it. गैस मालिक्यूल अगर उसके रास्ते में आते हैं, जब उसे पास हम करते हैं तो उसमें ionization क्रिएट करता है. Another slide, beta particle on the base of nature, steam beta particle emitted by the nucleus. Prompt deflection of electric and magnetic field. Becquerel show that beta particle are identical with electrons. बिल्कुल Becquerel दा खबरा उखला जे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम आरा रिपोर्ट डिस्कवरी करे वा अब Becquerel दा खबरा उखला चेरा दा पार्टिकल चिकम दी नो दा इलेक्ट्रॉन पशंते दी and they have very small mass as 1.1 over 1827 time atomic mass charge of one nuclei and represented by minus beta are this one. They travel about 10 times faster than alpha particle. The alpha nada se why zaka chalak this fakir their velocity is about the same as taqriban speed light. Zaka Becquerel will be that taqriban identical of an electron di. Penetrating by 100 times more penetrating power is the alpha particle na. So they because have the higher velocity the wajina no negligible mass thai ionization power is homsta no da kai. The third number manga ko gurum slide number 1 2 3 4 slide number 4 slide number 5 की जानिब में आता हूँ. Gamma rays. Nature, unlike alpha and beta, gamma does not consist of fat electromagnetic radiation and short wavelength. Yo, short wavelength. The chachi wavelength there is a shorty. Daga sewai. Tikshu kana che wavelength the shorty. So bal slide ke kom to kachi biya send ki gine chonki no de wajina gamma rays bubble voice message ki wai. No. Gamma तरफ तो असर उसंग चे माँ ज़िक्र रुको चे अल्फा प्रॉपर्टीज़ इधर बेटा प्रॉपर्टीज़ उस ता gamma प्रॉपर्टीज़ तरफ तराज़ो gamma कता सो करे नो दा डिप्लेट की गिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब दा खबर दा दा क्या ना इलेक्ट्रिक फील्ड तरफ तो जीना दा मैग्नेटिक देना मतलब दा ची दा चार्लेस थे और दा तवीरा सुशी कम दा कना the speed of light बराबर है. How the ionization power the tool होना सेवा है. Penetrating power there is सेवा है. Ionization power ने सेवा है. They show that they slide number 6 की खुद रेशियो दी. Table comparison of properties. One खुद रेशियो दी nature, velocity, penetrating power, stop boy वगैरह, helium nuclei. 1/10 of the velocity of light, vapor of this thing, illuminate sheet वगैरह, beta, gamma, तो सब सारा पर slide number 7 के 6 के खुद रेशियो
Tikshwa, this is all about this type of radiation. Then we will start liquid drop model theory inshallah tomorrow.